2 पिंजरे थे मेरे VHS टेप्स, एक चांदनी और एक रूप की रानी चोरों का राजा। दोनों के डायलॉग्स मेरे को बाय हार्ट पता है। ऑब्वियसली दिस मीन्स आई हैड अ बिग क्रश ऑन श्रीदेवी, मगर पता नहीं था मेरे को। मगर मैं कभी खुश नहीं थी और समझ नहीं आता था मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे को लगा लाइक ये भी बकवास है, आगे बढ़ो, बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएँगे। मगर वो कभी हुआ नहीं। One meeting, one kiss, and I knew that this is it. Seema had third stage cancer in 2007, which we didn't really beat because it came back in 2019. Hi guys, I'm from Calcutta. My name is Simi. I was born into a very uber conservative Punjabi family. But my mom being a criminal lawyer, I always grew up in a very strict family, which forced us to be more into education than anything else, really. I was fortunate that they allowed me to play sport because I hated school. I didn't like to be cooped up in a room. I loved the outdoors, and I was lucky I started off swimming and then made golf a career option. I started swimming actually at a very young age. I was a butterfly swimmer. I was a very anything basically not to study. And then one day, my mom was a golfer, my dad was a golfer, my brother was a golfer. We were fortunate enough to be members of 2 golf courses in Calcutta, the Royal Calcutta Golf Club and the Tollygunge Club. And I used to go to Tollygunge Club to swim, and I had a fight with my swimming coach, I think at the age of like 10 or 11, and I ran from the pool to the little driving range we had at Tolly, and went crying to my mom, and my mom being who she is, she just said, listen, I don't want you to cry. I don't have time for that. You want to swim, you swim. You want to start golf, you start golf. So literally wearing a swimsuit with a towel wrapped around my waist was how I started golf. And the day I started golf, in my head, I had decided that this is what I want to do as a career option, which was most bizarre because there was nothing as a career option as such anywhere in and around, anywhere in India, and certainly not in Southeast Asia. The closest I can say was there was a Japanese tour, and of course, you had America, you had Australia, and that's about it. So when I started my journey, I was an extremely competitive person. मेरी माँ भी बहुत competitive है, पूरी family पागल है, और उसके बाद I think once मैंने decide किया था कि I want to take this as a career option, I did everything in my power, which was with my mother, ये भी जीतना है, ये भी जीतना है, pro बनना है तो ये भी जीतना है. So चांस नहीं था सेकंड आने का. मेरे को अगर प्रो बनना था, अगर ये इस गेम से, इस खेल से अगर पैसे कमाने थे, आई हैड टू विन एवरीथिंग एज एन एमेचर इन इंडिया, व्हिच आई डिड इन 94, 95, 93, 94 आई थिंक. और फिर उसके बाद इंडिया में तो कोई जगह नहीं थी प्रोफेशनल गोल्फ के लिए, तो मैं इंडिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो हमारा ऑल इंडिया होता है, amateur tournament, wo I won the all India, I won the nationals in Malaysia, I won the nationals in Indonesia. So basically जो टूर्नामेंट मैं खेलने गई, इंडिया और बाहर, बांग्लादेश ओपन, हर जगह मैं गई, श्रीलंकन ओपन मैं जीतती गई. तो फिर कुछ बचा नहीं था जीतने के लिए, इसीलिए मेरी माँ फाइनली यू नो अलाउड मी कि ठीक है, क्योंकि अमेरिका जाना, क्वालिफाई करना टूर के लिए, जहाँ 800 लड़कियां जाती है और 10-12 लड़कियां क्वालिफाई करती है 90s में, और किसी लड़के ने कभी नहीं किया था. तो हम 2 जन थे वैसे, एक अर्जुन अटवाल जो अब PGA टूर में खेलता, और एक मैं, जहाँ LPGA में बने दोनों कैलकटा से. To make you understand how difficult it is, that the next Indian who made it came 20 years later. So that's how difficult making a sport a career option is, because you get injured, there's no chance of
or I'm depressed or I'm sad. You're sad too bad. You're not going to eat food if you're sad. So get up, get going, brush yourself off. There are ups and downs in life और आगे बढ़ते चलो नहीं तो भूखे मरोगे. यही सिचुएशन थी मेरी अमेरिका में और इसीलिए मैं आई थिंक जो मेरा घर में जो सर्कमस्टांसेस था मेरे सारे कंपेटिटिव सारे वेरी इंस्पायरिंग और वेरी पुशी कि मैं वहाँ जाके कुछ बन पाई. जब मैं खेल रही थी बोर बोर होती थी क्योंकि 2 पिक्चरें थे मेरे वीएचएस टेप्स, एक चांदनी और एक रूप की रानी चोरों का राजा. दोनों के डायलॉग्स मेरे को बाय हार्ट पता है. ऑब्वियसली दिस मीन्स आई हैड अ बिग क्रश ऑन श्रीदेवी मगर पता नहीं था मेरे को. I met a guy, American basketball player from Indiana, from not basketball varsity, and एक साल में हमने engagement की और फिर हमारी शादी भी हो गई 2001 में. और मैंने हम लोग वो लाइफ जीने लगे ऑफ हस्बैंड वाइफ while I'm playing on tour, and वो स्कूल में पढ़ाता था. मगर मैं कभी खुश नहीं थी और समझ नहीं आता था मैं खुश क्यों नहीं हूँ. मेरे को लगा लाइक ये भी बकवास है, आगे बढ़ो, बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे. मगर वो कभी हुआ नहीं. वो समझ नहीं आया कि कब उसको वो भी खुश नहीं था. ही चीटेड ऑन मी और मेरे को ऐसे लगा कि उसने एक दरवाज़ा खोल दिया मेरे लिए. आई थिंक ही डिड मी अ बिग फेवर क्योंकि वो जब उसने किया तो मेरे को वो जो दरवाज़ा खुला ऐसे अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. सो आई थिंक माई रिलेशनशिप विथ माई वाइफ टुडे started like that. It literally started as I'm just gonna have an affair till the relationship actually started. वो जब start हुआ मैं तभी भी शादीशुदा थी. एंड आई थिंक वो रिलेशनशिप जैसे मार्च में शुरू हुआ और मेरा डिवोर्स पेपर्स अप्रैल में चला गया. सो इट वाज लाइक एंड आई हैव नोन हर फ्रॉम द टाइम आई वाज 16. सो ये भी नहीं था कि मैं मेरी रिलेशनशिप कोई न्यू पर्सन थी. आई हैव नोन सीमा माय होल लाइफ. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स बट कभी कुछ था नहीं बिकॉज शी लिव्ड इन दिल्ली, शी मैरिड विद चिल्ड्रन. आई लिव्ड in America, and we met maybe once a year when I came to Delhi because my parents lived in Calcutta. My brother lived in Delhi, so I used to stop in Delhi, just to say hi to him and maybe have a dinner with my friends in Delhi before I went to Cal. So मेरा relationship सीमा के साथ ऐसे ही कुछ शुरू हुआ. मैं injured थी, मैं वापस नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी elbow में surgery होनी थी और उनके अब एक्स हस्बैंड डॉक्टर थे एंड वो मेरे को एक्चुअली एडवाइस किया कहाँ जाना है. एंड दैट्स हाउ माई रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्टेड. बट आई कैन टेल यू 100% it was like one meeting, one kiss, and I knew that this is it. I knew that moment itself that I have to change my whole life, whatever I have to sacrifice, जो भी करना है, I have to do it because this is what gives me internal happiness. मैंने अपने दिमाग से या दिल से कभी ज़िंदगी नहीं जी. अपनी ज़िंदगी ऑलवेज गट इंस्टिंक्ट से. आई ऑलवेज ट्रस्ट माई गट. मेरा पेट मेरे को कभी झूठ नहीं बोलता. तो माई गट इंस्टिंक्ट टोल्ड मी एट दैट टाइम that this is the person that you're going to be very happy with and this is the person you want to make your life with. बहुत मुश्किल थी, I can tell you that. But I soon put in a divorce with Chris. It wasn't very a bad divorce or anything, no fighting. He knew he wasn't happy and I knew I wasn't happy, so we, sort of mutually parted ways. First time I met Seema, I was 16 years old. It was at the Bombay Presidency Golf Club on the first tee. She was from Kenya. She was born and brought up in Kenya. And she came to India to play golf, the nationals. And that's where I met Seema. It was just like meeting anybody else. But what I really liked about her, of course, was that she was really funny and she had a great sense of humor. And I have, a very sarcastic sense of humor. So we sort of got along really well. But again, it was
one time meeting, and then, I have a whole life in America. It's nothing that you really think of. And I believe that in life, it just happens. There's no planning. You can't plan anything. It doesn't work like that. And when she kissed me, we were sitting on the stairs at this hotel, and she was telling me about her life, and I was listening to her life, and it was a very vulnerable moment. And she had to leave, and I said to her that you can leave if you kiss me, or मेरे दिमाग में चल रहा है कि don't kiss me on the forehead, जो भी करना. But that first kiss, that was it. That convinced me that this is who I want to be with and make my life with. That it was instant. There was nothing holding us back. It was literally जैसे हिंदी मूवी में वॉल को जंप करके किसी से मिलने जाता है, it was वैसे ही था, exactly like that. So, we've been together 17 years, Seema and I, and I'm blessed that I had an amazing father, complete opposite my mom and dad. When I told my mom that, in 2006 that I want to be with Seema, she said, घर से निकल जाओ, मेरे से बात मत करो, ये क्या बकवास है. And my father was reading the newspaper, I remember very clearly. And I said, Dad, I'm in love with a woman, etc., etc. And he put the newspaper down and he said, wow, that's a very unusual situation, but are you happy? And I said, yes, Dad, I'm very happy. And he said, great, now I have two daughters. And without missing a beat, started reading the newspaper. And I was like, wow. So, I had two extreme kind of reactions to my situation. We pulled through, and we pulled through many things. Seema had third stage cancer in 2007, which we didn't really beat because it came back in 2019. She had fourth stage cancer, and she was actually given, where the oncologist said, sorry, Seema, you have 2 months to live. And that journey was amazing because, everything, all good, bad, everything teaches you something. And I can tell you that I learned a lot from cancer. I learned a lot about how to not be scared. And fear is basically the cancer. Fear and dwelling on fear is cancer. Because we took an alternate route. When you have 2 months to live, you don't want to be, being in a hospital the whole time. You want to be living your life, and that's pretty much what we did. We went Tibetan medicine, and today I can tell you, 23, Seema is completely cancer free. It was a lifestyle change, and we are very blessed कि हमारे ऊपर शिवजी हैं जो always watching over us, and I think that is what got us where we are. When I was coming back to India, of course, Seema and I got into a relationship 2006 में. And we decided to start a pro tour in India. और मुझे actually media से बहुत backlash मिला कि तुम कौन होते हो टूर चलाने और टूर स्टार्ट करने में. हम दो जन थे, एक मिसेस सयाल थी और एक मैं, और कोई नहीं था. ना हमें कोई सपोर्ट कर रहा था, ना कोई हेल्प कर रहा था. मीडिया हमारे अगेंस्ट थे. विमेन स्पोर्ट इस देश में कोई भी कुछ भी चीज़ शुरू करना, अगर आपको लगता है अभी मुश्किल है, 90s में मुश्किल तो था नहीं, it was impossible. And you got a lot of crap from media, and it was sad that instead of encouraging, it's almost like everybody wants to be on a gravy train, but nobody wants to start that engine. So मेरी माँ बहुत अमेजिंग लेडी है. मैं जब रो के फ़ोन करती थी उन्हें कि मेरे को ऐसे लिखा है न्यूज़पेपर में, ऐसे लिखा है, तो मेरा मम्मी का अलग ही जवाब होता था कि तुमने बेटा कभी देखा है सूखे पेड़ पे कोई पत्थर मारते हुए? जो पेड़ फल देता है उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं. तो अगर तुमको फल देना है तो तुम पत्थर खाना सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट कर लो. तो I think, just that made me stronger and thicker. And now I'm, I want to call myself a little bulletproof.
Nothing really bothers me anymore other than bad traffic. But yeah, I think that part of my life was a very difficult part, trying to start a women's store in India. But look at it today. हमने ऐसा एक क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 50 लड़कियाँ अपना करियर बना रही हैं, जो जिनके माँ बाप 10-12 हज़ार की सैलरी में जीते थे, वो बच्चे, वो लड़की अपने माँ बाप के लिए गाड़ी खरीद के दिया है. तो आई थिंक ये स्टोरी होनी चाहिए. दैट्स व्हाट पीपल शुड टॉक. व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट दैट इज़, दैट दीज गर्ल्स हैव डन. एंड सबसे अमेजिंग थिंग था कि जब 2014 के करीब में, 2005 के करीब में मैंने एक्चुअली एक सर्वे लिया था इंडिया में, जो हमारे 250-300 गोल्फ कोर्सेज हैं, कि कितनी लड़कियां गोल्फ खेलती हैं. और 20 साल पहले आप बिलीव नहीं करोगी, अंडर द एज ऑफ 18 10 से कम थी नंबर. अगर आप आज देखोगे 2023 में, अगर आप सर्वे करोगे तो वो नंबर है 800. So actually, not even percentage wise, it's comparable. So now girls can see that we have a future. एक जगह है जहाँ हमें टाका बनाते पड़ी. So that was pretty, I think, very fulfilling and satisfying that I was able to provide something for many generations to come. And that's how it should be. I think everybody should be able to provide something for many generations to come, because that eventually is the only thing that gives you satisfaction. So if I had to give you a short little, message, fear and dwelling on fear and dwelling on stuff is what brings you down. Don't dwell on. Just get up and go for a run. Just the chemicals released in your body will change the way you think, and I can tell you a lot about it, but that's a totally different talk altogether. Cheers, good luck. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है. कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है. चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं. अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए. अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए.